I'll tell you in a second. Can you? Orbis, it's not live on YouTube. Again. What? It's not live on YouTube. Oh, that one makes it most of the time. For now, yeah. Is this shot? Leave it. Subro, come set your shot.
नहीं बता ये बता दे Yes. Whenever you're expecting people. Afshan? Afshan? Are more people coming? Are more people coming? Mahat? Mahat? How many people are we expecting? We're gonna wait like 2 minutes And let's start, right? Okay. 2 minutes and start, and you just can wait and see and come in the evening. इसमें क्या है यार Don't you see us doing and then she gets already Where's who? Sheila? Good to go. Good to go. You ready to start? You ready to start? Okay. I think I would ये थोड़ा निकाल बस Yeah. That's not him. He's just
Like, not even my ass is or any stand. Okay, I'm gonna wait. नहीं उसके बाद बोल दूंगा हाँ Yeah, like this. Recording in progress. I'm really surprised. You see? Say something to Ben and say something to Ben and you don't remember this? Maniji. Still not used to these afternoon showcases. Feels weird. It's kind of like being in the dark in the middle of the day. But I guess when you edit or you do studio stuff, you get used to that. You walk outside and you think you're a vampire. Exhale. Hi, everybody. Welcome to the Jeff Goldberg studio. It's a real pleasure to have you here this afternoon. Can we shut that door? I swear, 1.3 billion people and nobody knows how to shut a door. It's incredible. Even my 9-year-old son doesn't seem to know how to shut a door. Jokes aside, I apologize about the hastiness this afternoon if I didn't say hello to all of you properly. It's just I was in my head with 1,001 things. Hi, everybody. It is really nice to see all of you. Thank you so much for coming to the studio to support our actors and, of course, our program, and most importantly, your friends and or family who are on stage today. Today we have 2 showcases. So this is the first inning, and we'll have a second inning come later, but today is the 1:30 to 3:30 showcase of JG 75. This is a foundation showcase, and to contextualize that a little bit for you, what that means is that these actors have worked over the past 3 months in the first phase of our 9-month conservatory. They've worked tirelessly with their instructor, Mahati, who has been buffered by her colleague and also my colleague, all of our colleague actually, Subro. And today we're going to look at the result of their work as method actors. This is a scene showcase, so a little bit of the rules of the road. Rules of the road go a little something like this, which are, it's a scene showcase, thus none of the scenes are connected. So if you try to follow the story, you'll be bitterly disappointed, possibly confused, and hopefully not leave angry. Okay. Also, FYI, there is no clapping in between the scenes because otherwise we'd be here all day, and we do have a second inning that we have to get to. Mahati, do we have an intermission? We do have an intermission, which means there will be a 10-minute intermission of real 10 minutes, not IST minutes, which means suggested time minutes. The bathroom is in the corner, the water's in the fridge. With that said, you are allowed to applaud at the intermission, of course, and at the end of the showcase. For those of you who don't follow that, I'll make it real simple. You applaud when you see me. Okay, yes, I built the system that way, and it's the way it always has to be and always will remain, that the applause comes from me. Jokes aside, they're of course for the actors. So, lastly, ladies and gentlemen, I know it's been a while since many of us have been in the theater because of this little thing called the global pandemic. And if I may, please remember to switch your phone off or silent. You don't need to take pictures. We're taking plenty of them. This is streaming live on YouTube and Zoom. Hi to friends out there in the virtual world. It's wonderful to see all of you. And I can't wait to see you guys back here at the studio. So please, phones off. And if I may, place your phone in a secure location because
The falling phone phenomenon has not ceased to disrupt audiences the world over. With that said, my friends, ladies and gentlemen, it is my very great pleasure to present to you the scene showcase of Batch 75. Of course. योनो मेरी आपसे गुजारिश है कि मोहम्मद अली साहब को करके रहे पेश करें। यही सही सही ये बताइए गाड़ी चलाते हैं कितने चलाते हैं एक्सपर्ट तो सारी सी बातें बोल भी देते रहो घूस देते हो सरकारी अफसर से अपना काम नहीं करवाने के लिए घूस देते हैं आप जी कितने आतंकवादी कितने आतंकवादी आपके परिवार में कोई नहीं ये कैसे कह सकते हो मैं जानता हूँ शायद को नहीं जानते थे आप वो गलती थी जो ना पॉइंट टू बी नोटेड वो गलती थी आपकी हमें देखा नहीं गलती थी बिलाल उसने कुछ नहीं किया ये कैसे कह सकते आप अभी तक उनकी सजा खारिज नहीं हुई ये नहीं कह सकता खैर आपका बड़ा भाई आफ्ताब मोहम्मद ये नाम है ना उनका जी उनके बारे में वो भी यही है वो बिजनेस करता है लंदन में इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो आतंकवादी नहीं है अब प्रूव कैसे करेगी कि आप आतंकवादी नहीं है या आपके परिवार के सदस्य आतंकवादी नहीं है या आप देशद्रोही नहीं है मेरे पास कोई वजह नहीं आपके पास कोई वजह नहीं होगी जनाब लेकिन प्रोसिक्यूशन का ये मानना है कि आप और आपके परिवार वाले लोग उन बच्चों के साथ मिलकर धंधा करते थे आतंकवादियों और पैसा कमाते थे आपके ऊपर ये आरोप है कि आप एक देशद्रोही हैं आप एक आतंकवादी है बताइए मुझे आप इसे कैसे साबित करेंगे बताइए देशद्रोही नहीं है ये आप कह रहे हैं ना ये आप कह रहे हैं और किन चॉइसेस पर हम मान लें कि आप देशद्रोही नहीं है ये ना पॉइंट टू बी नोटेड किन आधार पर क्या आपके पास चॉइस थी जब अपने मुल्क वापस जाने की आप नहीं गए इसलिए या आप इनकम टैक्स टाइम पे भरते हैं आप वोट देते हैं आपके अभी तक एक भी चालान नहीं कटे कैसे साबित करेंगे आप कि आप देशद्रोही नहीं है प्लीज बोलिए और थोड़ा जोर से साहब जब पूरी कुरान पढ़ी थी तब मालूम पड़ा था कि क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे सवाल पूछेगा कि मैं एक अच्छा मुसलमान था या नहीं फैसला वो करेगा वो फैसला करेगा आपके लिए साहब कोशिश तो यही रहती है कि मैं एक अच्छा मुसलमान बनूं उसे को कभी कभार गलतियां हो जाती हैं वो गलती नहीं थी आपकी वो गलती नहीं थी आपको पता था आपका भाई आफ्ताब मोहम्मद आपका भाई बिलाल ये सब आतंकवादी हमलों में शामिल थे वो गलती नहीं थी आपकी यादव जी संतोष जी जिस मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे जिसके तहत मुझ पर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के एक्यूजेशंस लगाए गए थे बहुत डरा हुआ था मैं उस रात गलती की है जनाब तो डरे रहोगे साहब मैं ही नहीं बल्कि हर एक मुसलमान डरा हुआ था सुनिए मुझे और इस कोर्ट को ये अपनी धकी हुई सी बकवास सी बातें सुनाकर ना ही मेरा ना ही उनका वक्त मुद्दे पर आइए आप बताइए क्या बताओ सर और थोड़ा खुल के और सोच गलती की ना उस रात मीटिंग की रात के बाद एक शदीद नफरत घर कर गई थी मेरे ज़हन में वहां से लेके घर तक के सफर में मैं एक अच्छा मुसलमान नहीं था तो भला तो हिंदुओं का जिन्होंने मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाया मतलब आप ये मानते हो कि आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो चौबे जी सोनकर और चौबे ने मिलकर मुझे एक अच्छा मुसलमान बनाया साहब काश उस रात चौबे और सोनकर हर किसी मुसलमान के घर जा सके होते आपका ईमान कहाँ था वो टाइम पे अगर आपको ये लग रहा है कि आप एक अच्छे मुसलमान नहीं थे तो आपका ईमान कहाँ था जब साहब मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा मुझे बोलने दीजिए
जरूरी है जान लेना उन लोगों के बारे में भी जिन पर आतंकवादी होने के इल्जाम लगाए गए हैं। यादव जी, मैं जो कुछ भी बना इस जिंदगी में इस मुल्क ने बनाया। वो तो दिख रहा है। मुसलमान होने के फायदे भी हुए इस मुल्क में, तो कभी कभी शक की निगाहों से भी देखा गया, लेकिन दफन उसी कब्रिस्तान में होंगे जो मेरे घर से 200 मीटर की दूरी पर है। यादव जी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे थे कि वो मुसलमानों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं बोलता हूँ, वो होते कौन है मेरे ही घर में मेरा स्वागत करने वाले? वो होते कौन है? उन्हें हक किसने दिया? आपको किसने? अरे यार, जितना आपका घर उतना मेरा भी है। लेकिन आपको हक किसने दिया? अगर आपको फर्क करना नहीं आता है शाहिद पे और मुराद अली मोहम्मद में, तो आप पता करिए ऐसा क्यों है। अगर इनको नहीं आता है मुझ पर भरोसा करना, तो ये पता करें ऐसा क्यों है। अगर उसामा बिन लादेन की दाढ़ी और मेरी दाढ़ी में कोई फर्क नहीं है, तो मुझे भी हक है मेरी सुन्नत निभाने का। इनके कहने से मैं चलूं। शायद ऐसा करने वाला नहीं दिखा मुझे। आपको दिखा नहीं कि आपको पता नहीं था? गलती थी मेरी। वो गलती नहीं थी। चौबे को भी तो नहीं दिखा। इल्जाम आप पे लगा हुआ है। सोनकर को भी तो नहीं दिखा। इल्जाम आप पे लगा हुआ है। उनसे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं? अरे मुराद अली को क्यों नहीं दिखाई देता है? महफूज आलम मेरे भाइयों को बरगला रहा है। किस आधार पर उनसे सवाल करें? जब आपकी भाई, आपकी भतीजों ने उन 16 आतंकवादियों को मिलकर मारा, हम किस आधार पर उन पर ये करें, शक करें? आप बताइए उन्हें। पुलिस वाले उनसे क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं जज साहब? यादव जी, याद रखिए, मुझसे गले लगा के सवाल पूछिएगा, कलेजा निकाल के रख दूंगा। और उंगली उठा के पूछिएगा तो याद रखिए, मेरी जवाबदेही आपसे नहीं है, मेरे मुल्क से है, मेरे ईमान से। That's all, man. Asshole. 1 second यार। क्या बताऊं? यही ना कि मेरे सारे सपने टूट गए। पता है, प्राइमरी स्कूल में मैंने जब से धूम देखी थी ना, तब से मेरा सपना कि अपनी चोर बॉयफ्रेंड की स्पोर्ट्स बाइक पे ऐसे चिपक कर बैठूंगी ना कि सारे मोहल्ले वाले गए। ये लड़की तो हाथ से निकल गई। पर प्रॉब्लम ये है ना कि जॉन इब्राहिम के पास हाई मोटर बाइक नहीं, पिंक स्कूटी है। पीछे बैठता है वो मेरे, वो भी दोनों टांगे एक तरफ करके, क्योंकि उसकी स्कूटी पे सिर्फ एक फुट रेस्ट है। ये ठीक है, जॉन इब्राहिम भी कौन सा परफेक्ट था? तुझे क्या लगता है बिपाशा बासु ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया? मैं ना सच बताती हूँ, ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं। सब सारा कहानियों का दोष है यार, फीमेल बैशिंग बॉलीवुड। प्यार का नशा में देख लो, 5 मिनट तक बोलते रहता है, लड़कियां ये करती है, लड़कियां वो करती है, लड़कियां जीना हराम कर देती है। लड़के क्या करते हैं ये कोई बताता है? नहीं ना, वो मैं बताती हूँ। रोमांस के नाम पर बीच रोड पर दूसरे कंधे पर हाथ रखकर कुछ तो पिंकी फिंगर झुलाते रहते हैं, और अगर गलती से इन्हीं दोस्तों के सामने आपने उनका हाथ पकड़ लिया ना, तो ऐसे छुड़ाते कि मानो करंट लग गया हो। वो क्या है, सख्त लौंडे की इमेज मेंटेन करना है नहीं तो अपने दोस्तों के सामने। और अगर उन्हें आई लव यू बोल दो तो मी टू करके टाल देंगे, लेकिन दारू पी के अपने फ्रेंड के बिल्डिंग के सामने आई लव यू ब्रो, तू ही मेरा यार है, चिल्लाते रहते हैं। शॉपिंग नहीं करने देते यार लोग, खुद तो 4 कपड़े खरीद के फ्री हो जाते हैं। भाई तुम्हारे पास चॉइस ही कितनी है, जितने तुम्हारे कपड़ों की वैरायटी है ना, उससे ज्यादा तो मेरे लिपस्टिक्स के शेड्स है। लेकिन ये कौन समझा उन्हें, बाहर जाना हो ना तो 5 मिनट में डीओ मार के खड़े हो जाएंगे, और अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा ना तो नहा लेंगे, और फिर 5 मिनट बाद अलार्म क्लॉक की तरह चैं चैं चैं, बेबी तैयार हो, चल ले, आज ही चल लोगी। अब इन्हें कौन बताए कि नो मेकअप में भी कितना मेकअप होता है। काजल, शैडो,
मस्कारा एंड दिस इज जस्ट फॉर द आईज। और अगर एक दिन मैंने गलती से काजल नहीं लगाया तो फिर मुझसे पूछने लगेगा दीदी क्या हुआ, बीमार हो। मेरी समझ में नहीं आता है कि ये सारा इनका अटेंशन टू डिटेल है ना, ये तब कहा जाता है जब हम ड्रेसिंग रूम के सामने खड़े होकर इनसे पूछते हैं बेबी कैसी लग रही हो, तब तो बस अपने फोन में घुसे वाओ सो ब्यूटीफुल यार, सही है। नहीं मगर ये अटेंशन देते हैं तब जब हम किसी गाय फ्रेंड के साथ बाहर जाते हैं, तब तो हर 5 मिनट में इनका मैसेज आ जाएगा बेबी कहाँ हो, आई एम मिसिंग यू सो मच, प्लीज कम टू मी। अरे भाई ओ फ्रेंड्स के साथ हूँ, चिल कर रही हूँ, बताया ना कि बाद में बात करूंगी, मैं बिजी हूँ। लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, फिर सामने से इसका फोन आ जाएगा बेबी हु इज मोर इम्पोर्टेंट, हिम और मी? Hey, I am more important than the both of you. Yeah, bloody just because I'm hanging out with a guy that does not mean I'm cheating on you, yeah. और अगर ये तुम्हें लगता है ना तो ये तुम्हारे अंदर की इनसिक्योरिटी है, इसके लिए मैं अपनी सोशल लाइफ छोड़ दूंगी। फिर उस दिन मैं घर गई ना तो फिर मुझसे पूछने लगा बेबी गुस्सा हो, बता गुस्सा हो। अरे इडियट, अगर अब मैं गुस्से के बीच में बताने बैठ गई कि मैं गुस्सा क्यों हूं तो मैं गुस्सा कब करूंगी, कैरेक्टर नहीं ब्रेक हो जाएगा मेरा। और अगर मैं नहीं बताऊंगी तो इसके अजम्पशन शुरू हो जाते हैं। ओह इज इट दैट टाइम ऑफ द मंथ, मूड स्विंग्स हो गए? नहीं इडियट, फीलिंग्स बोलते हैं इसे, जो सबके पास होती है विद और विदाउट पीरियड्स। और क्यों ना हो में मूड स्विंग्स, थिएटर में तो बोलते हैं ना कि नर्वस होते हैं, तो हम तो सारी रस फील करें। एक बात बताती हूँ, ये लड़कों को इमोशंस एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। वो ब्लैक विडो वालों को ही देख लो यार, एक ब्रूस बैनर है जिसकी मुंह से कुछ निकलता नहीं है, हल्क है जो किसी की सुनता नहीं है, वो खुद चिक फ्लिक्स देख के फूट के रोता है। मेरा मेकअप यूज करता है फिर भी मैं कुछ नहीं बोलती, जबरदस्ती बर्तन धोता है जो मुझे फिर से धोने पड़ते हैं क्योंकि उसे फिनाइल और लिक्विड सोप में डिफरेंस ही नहीं बताया। और जब मैं बर्तन धोती हूँ तो मुझसे पूछता है अरे बेबी तुमने क्यों धोए बर्तन, मैं खुद धो लेता। बड़े आए हमें मूडी करने वाले, बड़ी एसोल। ढक्कन उठाइए, ये मल्टीपर्पज है, आगे लगाएंगे तो बकवास बंद और पीछे लगाएंगे तो भगवास बंद, समझे? और है ना, इस्तेमाल करने के बाद धो लीजिएगा नहीं तो बवासी हो जाएगा। अरे दिक्कत क्या आपकी यार, हैं? चाहते क्या हो? कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे हैं? बाकी लोगों की तरह आवारागर्दी तो नहीं कर रहे हैं, सड़क पे घूमे लट्ठाई तो नहीं कर रहे, कोशिश ही कर रहे हैं ना। अरे मालिक नहीं होती पढ़ाई, नहीं समझ में आता हमको, क्या करें बताइए? जान ले अपनी, नहीं है दिमाग, नहीं समझता हमको। अच्छा छोड़िए, आप में है दिमाग है? क्या लगता है आपको आप में है दिमाग? बोलिए, आप ही का तो डीएनए घूम रहा है हमारे अंदर, है दिमाग? अच्छा छोड़िए, अम्मा में है दिमाग, क्या कहते हो? अम्मा में है दिमाग? अरे जब आप दोनों लोगों में दिमाग नहीं, आप दोनों लोग ही जीरो हैं, तो हम आरे भट्ट निकल जाएंगे। कितनी बार बोला, ये कापी किताब हमारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, नहीं समझता हमको, फिर भी कोशिश कर रहे हैं ना,
करें ही नहीं, क्या कीजिए और गली के गुंडे बन जाए। 15 साल की उम्र में सचिन इंडिया के लिए क्रिकेट खेल रहा था, उसके बावजूद भी तुम्हारी तरह चैं 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 करते रहते ना, तो इंडिया का आधा ही बिजनेसमैन अपना सामान नहीं बेच पाता टीवी पे। यार इसके पार भी दुनिया है, हैं? डेस्टिनी नाम का भी चीज होता है। अच्छा चलो छोड़ो, अपना एक को अचीवमेंट बता दो, कौन सा तोप का काम किया हो आज तक, बताना जरा, क्या किया हो आज तक तुम? हमको पहले ही तो किया हो। पैशन है हमारा यार, समझते हो पैशन? बस निकलना है यहां से, समझे आप? कैसे समझेंगे साला, दिमाग और तो समझेंगे ना। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं चाहता हूँ आप लोग रिस्पॉन्ड करें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ। थैंक यू। क्या आप सब लोग बात बोल सकते हैं? हाँ, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो UN Council Resolution number 47 of 1948, Article 3 of Geneva Convention, and Article 370 of the Indian Constitution Act. ये सब सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, सिर्फ एक, हम हैं कि हम नहीं? हम हैं तो हम कहां हैं, और नहीं हैं तो कहां गए? हम हैं तो किस लिए, और गए तो कब? मुझे ऐसा लगता है हम सबको एक सवाल पूछना चाहिए कि हम कभी थे भी या कभी थे ही नहीं। हम सबके साथ ना जुज्बा हो गया। जुज्बा का मतलब समझते हैं आप लोग? जुज्बा का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं। एक बार एक बैंक में रॉबर्स घुस गए ढेर सारी गन्स के साथ, और एक रॉबर ने कैशियर के गन पॉइंट पे अपना सर रख दिया, और कैशियर गन को देख के रोने लगा। रॉबर ने कहा, कैश दे वरना गोली ले, और घबरा के मारे कैशियर ने सारा कैश रॉबर को दे दिया, और रॉबर वो सारा कैश लेकर बड़े आराम से नेक्स्ट काउंटर पर जाता है, कहता है, एक फॉर्म देना प्लीज, नया अकाउंट खोलना है। इसे कहते हैं जुज्बा। बेखौफ निडर जैसे अफ्स्पा, इसे कहते हैं जुज्बा। ये हुआ है हमारे साथ। लगभग इतना सा था, इतना, और मेरी आंखों के सामने किसी ने मेरे अबू को गोली मार दी। मेरी जो माँ है वो जीते जी मर गई। मैं और इकबाल बाहर आंगन में खेल रहे थे। इकबाल की शक्ल तुम्हारी तरह दिखती है। मैं और इकबाल बाहर आंगन में खेल रहे थे, और जोर जोर से अचानक से सायरन बजना शुरू हो गया, और तुम सब अपनी माँ के कुच्चड़ में जाकर छुप गए थे। तुम सब जोर जोर से अनाउंसमेंट होना शुरू हो गया,
Indian Armed Forces, Act 5, Rule 4. Any High Commission officer? Ji Janab. Any non-warrant officer? Ji Janab. Any warrant officer? Ji Janab. And all the equivalent officers. I want law and order in the society. If you want to use power, force, action, fire, use anything, but maintain the law and order of the society. Give them the warning once. If they don't listen, use all your power. Everything that you have. It may cause death. Like it caused! It caused! Use anything. लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? आपको दिखता है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है ये लॉ एंड ऑर्डर? अरे जिसका लॉ उसी का ऑर्डर, और हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों मिलकर खेल रहे हैं हमारे साथ बॉर्डर बॉर्डर। अब ना हमें छोड़े हिंदुस्तान, अब ना हमें छोड़े पाकिस्तान, लेकिन कोई हमसे भी तो पूछो हम क्या चाहते हैं? ब्रेड चोर, हम क्या चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं आजादी। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो आजादी? आजादी, आजादी तो हम मिलके कहेंगे आजादी। क्या चाहिए हमें? आजादी। क्या चाहिए हमें? आजादी। आजादी, आजादी लेके रहेंगे, आजादी लेके रहेंगे, आजादी। पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है, बस नींद सा गया। वही शोर आवाज़, घर था ना था ना घर था ना। माचुरी रंडी भड़वे लाश शिकायत नहीं, आखिर पुलिस की नौकरी की है तो इतना तो झेलना होगा। एक अजीब सा एहसास है, ऐसा लगता है रोज नया दिन आ रहा है और मैं वही पुराना। लोग वही पुराने हैं, वैसे ही चले गए। मैंने कहा भाई ये जो जिंदगी की गाड़ी चल रही है क्यों ना इसकी चेन में खींचता हूँ और इससे उतरता हूँ। 3 बजे डॉक्टर साहब जिसके कारण पहली जो हमें पिस्तौल मिलती है उसकी गोली सरकारी होती है, उसकी गोली 45 रुपए की है। मैंने कहा यार अगर मैं मर जाऊंगा तो सरकार का पैसा वेस्ट होगा, मैं नहीं मर सकता। दूसरी मेरा जो असिस्टेंट है मुन्ना, उसके यहाँ रिलेटिव्स आए हुए थे हरियाणा से। नेक्स्ट डे होली थी। मैंने कहा यार अगर मैं मर गया तो इसकी तो होली खराब हो जाएगी।
तीसरी जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे को छुई, मेरी तुरंत नजर गई खिड़की की तरफ। खिड़की के बाहर हमेशा की तरह वही एक खूबसूरत सा इंतजार, बहुत ही खूबसूरत नजारा लग रहा है। मैं उठा अपनी जगह से खिड़की बंद कर दी, मैंने खिड़की बंद की, वापस आया तो वो मोमेंट ही जा चुका है, वो टूट गया। उसके बाद मरने की इच्छा ही नहीं करी। सर मुझे नींद भी नहीं आ रही है, ये कुछ 4-5 दिन से नींद नहीं आ रही। आखिरी बार आखिरी बार जब गाँव गया, माँ के गोद में सर रख के लेटा हुआ था, नहीं नींद आई थी, अचानक अपने आप नींद आई थी। और गहरी नींद आई थी, सोता रहा घंटों। नींद तो माँ के गोद में ही आती है डॉक्टर साहब, यहाँ नहीं आती भीड़ में। हो गया क्या हुआ? आप लोग मुझे शॉक देंगे, शॉक देंगे, शॉक, रेडियो शॉक देंगे, शॉक देंगे। Okay. हेलो, आप कभी तो कभी बता रहे फोटो भेज। हाँ ठीक है, अभी Excuse me, sir. मिस्टर केरी मिलना चाहता हूँ। सेंडिंग जी सर। you had trouble or not? It's good of you to see me. How are you? I'm good. How are you? You came from Paris, huh? I just came from the station. Yeah, Paris. You know Paris. Well, they said you're French. I came here from France, that doesn't mean I'm French. Why don't you guess where I'm from? You didn't come on a train. Right? So it is an which was up. I have a tailor in New York City.
Finacci, Italian. That's my uncle. See, he has a basement on Mott Street in which he makes soups, and he's my uncle, so every stitch my blood. I heard you just well, Mr. Patan, but now I see. Not as well as me. Let me tell you one thing. I have a question. But you know, there are no sort of a man who will work in a basement with a needle and a thread. Again. You know, I am surprised how easy it was to get into a room with you. Oh, really? And now, Yes, and now. and now you should know that during the trouble you had on your factory floor earlier, I sent a guy into your office and he found your gun. That little mix, he found your gun. And he unloaded it. So, forgive me for my pronunciation here, but Iqbal Patan? Fatima Khan. Salim Khan. One word, Patan. Respect. You took a bullet for me. Latifa Patan. Finally, last but not least, Mr. Varis. None of you will survive. Your level of security is pitiful, to say the least. And we are an organization, well, let's say, of a different dimension. I could have killed you when I walked through the door, but you see, I want you to be the last. I want you to survive after your entire family is dead, because my mother says that's what will hurt you the most. So, you people have traditions of honor, as do we. So I want to suggest that we settle this vendetta with honor. No civilians. No cops. Grazie. So. All right, ladies and gentlemen. It's right here. It's right here. All right. And you're on it now. You guys can work a lot better for you. I mean, you don't have to.
Wait. ऐसा कर रहा है ना? Hi, all the best. No worries. बहुत केला एक्सपोजर You guys are the real winners. I want to you fuck up on stage. How long are Oh, it's the short. It's the short one. The 16 and 5. So it'll be like 8 hours. Yeah, I should come home then get I said so. When did you sleep on my sleep? I don't know, but I had she's very close to Lara. Hey, what's up, you guys?
Tell you after. No, it wasn't, you don't have to. I didn't say that. I just don't kiss and tell. Keep it going. Don't worry. I'll tell you on stage. I can tell you. I tell everybody. Don't worry. You'll know. I'm not shy about telling. I'm so sorry. ये है लाइव स्ट्रीम, ये लाइव स्ट्रीम है। इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ये रिकॉर्ड क्या फोन करना चल मैं बता इस पे नहीं देखो बहुत ही अच्छे बनेंगे आप। थैंक यू। लाइक करेंगे। There's a hat. Denver.
Everybody, please find your seats. Thank you. Spotlight. There you go. Right there. Hit a three-pointer like no one's business. Just see her take a layup. All right. Anyway, folks, thank you very much for being punctual. I really appreciate it. You know, I feel like these afternoon affairs are a little bit more informal than the evening affairs, but then again, I'm not terribly formal at any hour of the day. So with that said, folks, please just make sure your phone is off and or on silent, because that really is the only thing that I have to say right now. And without further ado, Act 2 of JG75's Showcase. Please take it. want you to come to California. What? I want you to come. How do you know that? I don't know, I feel it. Just find out something about me which you don't know. It's a big mistake. So now it's time to take it back. This is a pretty serious thing. You don't take it. California. Go on with it. Something that you want to do. You don't have to go on. You can't even take it back. Take it back? Why would I want to take it back? I just wanted to come to California. Why not? Because I have a job here. Look, you know, if you're not in love with me, you can just say it. It's fine. I'm saying that I don't love you. Then why don't you come with me? What are you afraid of? What do you mean I'm not saying? I mean, at least give me a reason why you won't come with me. I don't know. I can't. What is scaring you? What the fuck is scaring me? What is scaring me? You know, actually, what aren't you scared of? You live in a small world where nothing challenges you, and you're scared shitless nevertheless. So it's fine. It's fine. You don't tell me about my world. You're the one that's afraid. I'm afraid. Yeah. You just want to have something from the other side of the town and you know, marry some prick from Is fucking that what you think? Is Stanford. that what you Marry think some of me? prick from Stanford who your parents approve of and just tell your upper crust friends how you went slum it too.
Will, I inherited that money when I was 13 years old after my father died. Fuck you. You think I want any of this? Will, that money is a burden for me. Okay. Every day I wake up in the morning, I wish I could give it back. Or that I could spend one more day with my father. Will, but this is life and I deal with it, okay? You're the one that's afraid. What the fuck am I afraid of? You're afraid that I won't love you back, and Will, I'm afraid too, but at least have the balls to be honest with you. I'm not honest with you. You think you're honest with me? What about your 12 brothers, Will? That is what this is about. What do you want to know? What do you want to know? That I don't have any brothers and that I'm a fucking orphan. Is that what you want to know? Yeah, Will, I didn't know that. Did I know that? Because nobody wants to know that shit. I do. No, you don't. Nobody wants to know. What do you want to know? That cigarettes were put on me when I was a child and this is not a fucking surgery. That's what you want to know. Have you thought that maybe this is the point that I could save you, that we're a team, Will? Have you thought of that I could save you? Do I have something on my back which says save me? You want to save me now? I just want to be with you, Will. I love you. I love Don't bullshit me! Don't bullshit me. you. You know what I want to know? I just want you to tell me that you don't love me. And I will stop asking you questions. I'll move on and I'll stop bothering you. Look, I'll tell you. I have no problem with her being who she truly is. I don't hold it against her. I'm not judging her. She just doesn't want to hear the truth, man. Like, I'm a lowlife. I'm a gambler. I accept it freely because that is my reality. I don't go around trying to sugarcoat it. It is what it is, and I am what I am, okay? People get so fucking hell-bent on accurate descriptions of what the truth actually is, especially if it pertains to who they really are, because they can't face the reality of it for themselves. Everyone's trying to show a face instead of being their real selves. To turn to your fellow neighbors and call them out on something is considered preposterous today. Am I right? All these arrows and daggers that get flung at you by all these different groups, it's fucking scary shit, man. Everyone becomes Frankenstein for opening their mouths and stating the facts. That's why I don't talk to them. I stay low-key in my low-life world, and nobody bothers me and I don't bother nobody, amen? If I'm asked my opinion about an issue, I just go dumb. I don't play sides, I don't play games, I just honestly waste my time. I could care less. Lily was the exception. I took an extra minute to tell her the truth because, as you said, we were married and we had an understanding, or at least I thought we had an understanding, but
She kicked me out the bar because I had to call the cops. So I really had no choice but to leave. Now she hates me, but she respects me because she knows I play straight. That's why I don't go to the bar anymore. Because I don't need the aggravation, especially when watching the game. But I'll tell you something. Actually, take back what I said about calling her what I called her. I take it back because, man, I don't want her to be that way. You know, it's not for me to tell her how to live her life, but inside myself, if you ask me the truth, I'm only bitter about her ongoings because she deserves so much better than that. She's a fucking woman who's selling herself short of what she's worth. She married me, for instance. I'm a bum. She never should have married me. Sometimes I'll just wonder, like, if she's born anywhere else, somewhere with better upbringing, somewhere, you know, where she actually had a shot at her potential. And she'd be the greatest woman on earth. So, in short, if I seem hostile or blunt by words, it's on account that I really care for her. And I pray to God every single day that I was a better man, capable of giving her the life that she deserves. So, if you ever repeat any of this to her, I will fucking kill you. Yes, I'll fucking kill you. Can I come in, sir? सर्दियों के खिलाफ मुंबई जाने रिपोर्ट भेजा है गिरफ्तारी वारंट फिल्म निर्माता आशुकी नुरानी ने रहा है जान मारने की धमकी देने का 2013 के में संजय दत्त के हाजिर नहीं होने का नमस्ते सर। जो बात आपसे कहनी थी उसके लिए लिखना चाहिए थी थोड़ी भी नहीं पड़ी। मुझे लगता है आपकी बीवी से पहले आपका बेटा मर जाएगा सर। वो दिखता है आप कैसे अपनी वाइफ की सेवा करते हो, पेमेंट इश्यूज की प्रॉब्लम हो के सोसाइटी की प्रॉब्लम हो, आप हर काम एकदम ईमानदारी से करते हो सर। यू आर अ ग्रेट मैन सर। ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है सर। इससे ना लाइफ की कोई फिलॉसफी है ना कोई मकसद है। उनको बोलता है कमली
लाइफ में सिर्फ 3 चीज होती है ब्रो, क व च, खाना पीना छोड़ना, सॉरी प्रॉब्लम क्या है सर, आप चाहते हो आप जैसा बने, वो दबके है, वो आपके इस लेगेसी की पूछने से दबके है सर, उसे पता है वो कितना भी ट्राई कर ले ना, वो आप जितना महान बन ही नहीं सकते, तो ट्राई भी नहीं करते। एक एडवाइस है तुझसे, आप उसका दोस्त बनिए सर, उसके साथ बैठिए, दारू पीजिए, भले ही 2-4 गाली मारी आपसे, लेकिन उसे समझाइए इधर इट्स ओके टू बी ऑर्डिनरी, ये सुनील बनना जरूरी नहीं है, इट्स ओके टू बी सिंसियर। इन्हें बचा भी लो सर, मर जाएगा, मर जाएगा सर, मैं किसको बनूंगा? ये संजू, संजू सुन, खींचे तो पापा का पीछे, इन्हें बचा भी लो सर, सॉरी। चेंज हो गया, मेरा शो चल रहा था, सॉरी, मुझे पता नहीं था, वापस लगा, नेक्स्ट शो है ना, कितनी बार देखेगा? तुझे दिखाना चाहता हूँ, नहीं देखना। तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? तेरा प्रॉब्लम क्या है भाई? तुझे पता है मेरा प्रॉब्लम क्या है? तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। ये सब बकवास ना बंद कर भाई। 8 साल में एक बार आया तू हमसे मिलने, मुश्किल से 10 चल 20 फोन किए होंगे तूने, और पूछता है मेरा प्रॉब्लम क्या है? तूने कितने फोन कर लिए मुझे? बहुत किया यार, लेकिन बिना मतलब की घंटी बजा रहा था मैं बनी, तू भूल गया हमें। समझ यार, नई जगह पे था, नए लोग थे यार, नया शहर, मुझे लाइफ बनानी थी, करियर बनाना था, सपने बनाने थे यार। तेरे सपने, तेरी लाइफ, तेरी प्रॉब्लम्स, तेरे बहाने मेरा क्या बनी? तुझे पता क्या है मेरे बारे में? हाँ, मेरी लाइफ, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे हालात। यार अदिति से भी मेरी कोई रोज बात तो नहीं होती थी, वो तो नहीं सड़ रही मुझसे। वो इसलिए क्योंकि उसको तेरे से कोई उम्मीद ही नहीं है। उसे तो ये भी नहीं लगा कि तू उसकी शादी पे आएगा, और कैसे ना लगता, तू तो अपने बाप की मैयत पर नहीं आया है साले। सुनीति सही है, मुझसे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही
ठीक है? कैसा? खुदगर्ज? बेशरम? थोड़ी दुनिया का देखी बनी, दिमाग खराब हो गया तेरा। अबे मैं कम से कम तेरी तरह तो न्यूज़ सारे बेवड़े जुआरी बर्बाद। Fuck off buddy! अभी अपने प्रॉब्लम्स मुझ पे मत डाल। तुझे क्या लगता है मैं बहुत खुश हूं? मैं नहीं सोचता इन सब चीजों के बारे में, मुझे गिल्ट नहीं होता। अगर तुझे इतना ही गिल्ट था, इतना ज्यादा, तो तूने कभी कुछ किया क्यों नहीं? मैं रोज सोचता हूं यार। एक बार फोन कर लेता, एक बार पूछ लेता कि तू कैसा है अभी। इतना मुश्किल नहीं है बनी। नहीं थी हिम्मत। अब खुश है? नहीं थी हिम्मत। कितने प्रॉमिसेस किए थे, तेरे साथ बाहर खोलना था, पापा बीमार थे और मैं चला गया अपने सपनों के पीछे। तू सही है भाई, मैं हूं खुदगर्ज। मैंने तो सोचता था कि मैं वापस ही नहीं आऊंगा कभी, लेकिन नहीं रहा क्या देती के फोन के पर। सॉरी अभी, मुझे मुझे निकलना था यहाँ से यार। मैं मर रहा था यहाँ पे, लाइफ बनानी थी मुझे अपनी। I'm also sorry. मुझे अभी पता नहीं था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है। I swear अगर मुझे पता होता तो मैं खुद तेरे बैक में करती। Sorry. अच्छा बाहर का सुना मैंने। क्या कह सकते हैं उसके बारे में? बस दारू पी लिया। सच में तो किया था। बस बस तो शादी, सर्दी का मौसम था, लोग गर्म कपड़े डाले हुए थे। आपको तो आप ही बता दीजिए। 25 अक्टूबर ये तो कितने दिन में शादी हुई? 4 साल। एक कब क्या हुआ था शुरू से?
मैं आपको बताती हूँ। बात 4 साल पुरानी है। मैं एक छोटी बच्ची थी और कैन आई टॉक? हाँ, सो आई वाज वेरी यंग और मुझे राजा अवस्थी नाम की लड़की से बहुत प्यार था। इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी की और कैन आई टॉक? नहीं, मैं अपना नजरिया शेयर कर सकती हूँ या नहीं? No, it's okay. You know what? You talk. I'm going to go and sit over there. No, you let me know. ऐसा मैंने क्या किया? It's okay, ऐसे ही होता है। डॉक्टर दोस्तों, I'm also a doctor by profession. Okay? In my professional opinion, my wife is suffering from bipolar disorder. She has anxiety issues, acute hysteria, thyroid problem. थायराइड नहीं है मुझे। थायराइड के मैंने टेस्ट करवाए थे, रिजल्ट्स नेगेटिव आए थे ना। तुम बोलो और झूठ बोलो। What is this? Hormonal issues. You know, खुश रहती है तो खुशी रहती है, फिर अचानक से किसी बात का अफसोस करने लगती है। कई दिन किसी भी बात को लेकर नाराज रहेगी, फिर अचानक से खुश हो जाएगी। ठीक है तो ठीक ही रहेगी, और लड़ रही है तो लड़ती ही रहेगी। You know, you see the pattern, it goes like a graph. और आपके हिसाब से दुनिया की सारी औरतें फिर बाइपोलर होती शर्मा बताइए। डॉक्टर साहब हटो। अब मैं आपको शुरू से बताती हूँ। मेरा नाम तनुजा त्रिवेदी है। मैं कानपुर में बिहाना रोड की रहने वाली हूँ। मुझे एक लड़की से बहुत प्यार था। इस आदमी को मुझसे प्यार हो गया और ये धोखे से मुझे लंदन ले आया। मैंने सोचा ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, लेकिन इसका गुजारा जैसे तैसे होता है। पहले हम साउथ हॉल में रहते थे, जहाँ लोगों के घरों के बाहर अपने कच्चे सूखते। मेरे कहने पर इसने अपना घर बना। अब हम लंदन के बाहर कंट्री में रहते, वहाँ पर पूरा अपना 5 कबूतर और 3 लाख कुछ के अलावा कोई नहीं दिखता। ऐसी है? नहीं, शुरू से तो ऐसे नहीं थे। पहले तो प्यार था, एक्साइटमेंट थी, सेक्स था। हाँ, कैंडल लाइट डिनर्स होते थे, पब में बियर्स होते थे। फिर धीरे धीरे इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और सब कुछ तिलकनी में चला गया। I tell you, तिलकनी मतलब गायब, वैनिश। सर आप बताइए, एक्साइटमेंट के लिए मैं क्या करूँ? नाच के दिखा सकता हूँ मैं? ओह, तुम क्या नाचोगे? हालत देखिए अपनी मनु शर्मा। अदरक हो गया आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ, शादी के पहले तो मैं ऋतिक रोशन था ना। ऐसे ही थे, ना कोई पर्सनालिटी, ना कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। अरे तो राजू श्रीवास्तव से शादी कर लेती, मुझसे क्यों की? I can give her a stable life. चुटकुले नहीं सुना सकता हूँ मैं। तो तुम क्या चुटकुले सुनाओगे? दुनिया का सबसे बोरिंग आदमी है। इसको पूछो वीकेंड का प्लान क्या है, तो बोलता है टेस्को में 25% की छूट है, चलो घर का सामान ले आते, ले घुमाते। अगर हम बाहर पार्टी में जाते ना, तो आईटी के 4 बेवकूफों बुलाते, उनकी बीवियों के साथ। डॉक्टर साहब मैं आपको बताती हूँ, इसमें और मेरी रामपुर वाली बुआ की बातों में कोई भी फर्क नहीं है। इतनी हैप्पी लाइफ थी मेरी इंडिया में, पूरी की पूरी झंड कर दी इसने मेरी लाइफ। झंड मतलब डिस्ट्रॉय। डॉक्टर साहब मैं आपको बताती हूँ, मैंने आज तक अपने पापा को 1 कप चाय तक पिलाकर नहीं दी। इस घटिया इंसान के मैंने कपड़े धोए, इसके लिए खाना बनाया। ये मुझे बोलता है बोर हो रही हूँ तो बच्चों की ट्यूशन क्लासेस खोल दो। मैंने वो तो किए, फिर भी इसके बड़ी किसी भी कदर नहीं है। मैंने सोचा ये धीरे धीरे बदल जाएगा, इसमें थोड़ा रस भर जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। क्या क्या सपने देखते एक लड़की जब वो लव मैरिज करती है। But I think I love him. I just don't like him. No? I think I love him like a mammal, like a Homo sapien. यार तुम्हें ये क्या बकवास किए जा रही है तब से? क्या बोल रही है? हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई थी। पहली चीज हमारी अरेंज मैरिज हुई थी। और तुम्हें क्यों लगा था कि मैं बदल जाऊंगा? हाँ, मैं तुम्हें किसी पुल में हाथ फैलाकर मिला था क्या? अरेंज मैरिज हुई थी, शर्ट पैंट पहन के इसके माँ बाप के घर पे गया था मैं। बड़ी अच्छी पैंट शर्ट थी ना वो। अरे तो कुछ तो पहन के आया तो था ना तुम्हारे घर पे। ये
इसके पूरे रिश्तेदारों की मर्जी से हुई हमारी शादी और रस नहीं है। ये क्या है रस नहीं है? संतरा हूँ क्या मैं कि अचानक मेरे अंदर रस भर जाएगा? स्पार्क नहीं है, स्पार्क नहीं है, स्पार्क नहीं है। अरे आग नहीं हो यार, लाइटर थोड़ी ना स्पार्क नहीं है। इसकी स्पार्क में बताता हूँ आपको डॉक्टर। मेरा दोस्त है मधुर, उसकी बीवी के सर पे इसने कोक की बोतल मार दी थी जी। लोगों ने आना बंद कर दिया हमारे यहाँ। और अभी क्वेश्चन की बात की ना इन्होंने, पूछिए क्यों बंद हो गया? नहीं मत पूछिए, मैं बताता हूँ। बताएंगी नहीं, मैं बताता हूँ। बच्चों को चुप कराने के लिए शराब पिला दी इसने उन्हें। पुलिस केस हो गया, जेल जाते जाते बचा हूं मैं। सच्ची है। और अभी खत्म नहीं हुआ, ये औरत फ्लर्ट करती है पब में अंग्रेजों के साथ मेरे सामने। तो किसके साथ फ्लर्ट करूं? तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूं? कोशिश की थी मैंने, मगर तुम लाश को लाश। तुम्हें पता है ना, औरतों पे अत्याचार की 5000 साथी से पता है कि अरे तो 5000 साल से मैं ही कर रहा हूँ। और तुम सारी मर्द एक जैसे हो। जब तक तुम लोगों को सेक्स मिल रहा है तब तक कौन सा सेक्स नहीं मिला? 2018 में हुआ था। अरे तो क्यों ना यार? Listen, I don't even love you like a mammal. You taught him, right? Okay, come here. We hold hands. We hold hands, and then you bow. Where I have to say something nice about this because it is a graduation. So what's that? Yeah, about it. Don't worry, there's enough to go around. That's early today. I'm not feeling too saucy. That's how you get some good words. All right. I'm not feeling too saucy just yet. Okay. Let me just see. Right. No. Okay. All right. Right. You know what? We'll stick with an old adage. We'll go with ladies first. First comes the nice stuff that I do. Okay, so Radhika, I have to tell you, it was really great fun to watch you. First of all, let me just say, because the monologues, and as you guys know, that's like a really special thing. Because a monologue is your own choice, you're out there alone. And I just want to address everybody, because otherwise I was just repeating myself 6 different times. The monologues were great. All of your monologues were great, so don't ask me afterwards how my monologue. Your monologue was great. Okay? The Trouble with Johnny Abraham. You know what? I think there's more trouble with Johnny Abraham than what was in your monologue, by the way. But we'll talk about that a different time, because he definitely needs a bit of work. But no takebacks. It's funny, that scene, I'll share something personal with you about that scene. Apart from the fact that I've watched it easily 800,000 times performed on this stage. I actually was in Boston University in 1996 when I saw a film called Chasing Amy. And Ben Affleck was the lead in that film. And the director and Ben Affleck were in the audience that day. The director is Kevin Smith. And Kevin Smith stood up and was talking about his film, and Ben Affleck was talking about his role. And Kevin Smith made mention of the fact that very soon you would be hearing of this guy, Ben Affleck, who was not a star at the time, in a film that he had written. This very good friend. And he said, a good friend, he pointed him out, was Matt Damon, sitting in the audience, who nobody knew, and it was Good Will Hunting. And I sort of have this very special relationship with that film, and that scene particularly, because I've seen it so many times, and because it goes that far back in my life. And I have to tell you, I take it very seriously when I watch it, because, it has a little bit of ringtone for me. You did a great job with it. But Mono was hilarious.
because here. Come over here. Where's the room? Stand here. You're good. You're perfect here. Anj, no take backs. It was great. Really, really enjoyed that. Okay, but I have to tell you, your scene with the guilt trip, that was hilarious. You know, I really enjoyed that. Okay, I liked it a lot. I think Mahati wanted you to get a little more fighting in, a little more action. You know, but overall, what I thought was really fun to watch was, you know, because I peek in on the classes, you know, and I see how the actors are doing, you know, and the most important thing I think for anybody to gauge in the foundation is growth, and you can't judge yourself against anyone else. That's very hard to do because acting sometimes feels like a competitive team sport, and it's not. It's really, really not. And just to see the poise with which you handled everything, and the way you were able to maneuver everything and navigate it was really, really nice, especially because your monologue gave us a very different look, right? So you kept changing what you were showing us emotionally. Really good job, buddy. See, finished? I'll tell you what I said to Mahati after you did more. Because I've seen you act before. So, you know, and it's been a long time. Yeah. You know, he was locked out for a long time. And I turned to Mahati after you finished your scene. And I just said to her, I was like, gosh, I forgot how much fun this was. Really, I mean, really, you know, there were moments in it where that, especially towards the beginning, towards the end, where he emotionally let go, you have to earn that. You know, and the thing is, for a lot of actors, you know, when they do a scene like that, they want to be there immediately. You know, they want to be in that space immediately. But it only works if the actor creates that intimidation, that nervousness, that energy, and we see the coil tightening so that it has the spring. Well done, sir. Okay. You just know, you know what it's on. No one thinks you're all that, right? I do. Yeah, well, You know me, high functioning woman. That was probably the best compliment I ever maybe I don't know you well enough. Maybe I don't know you well enough. But honestly, the low life thing was really, really kind of a head fix. I didn't expect that. I didn't expect that from you at all. You know, and in the foundation showcase sphere, the monologue choice is a big deal because it's a representation of like where you think you're at as an actor. And I'm always very impressed by people who make choices that seem very out of box, very off map, you know. And not only do they have to make that choice, but they have to get there, go there, and stay there and achieve that. And you did. You did a really, really nice job with that. But I'll also say that your scene, Welcome to Mumbai. Hey, that took us a while to get there when we got there. The minute I heard the Peaky Blinders, I turned around and I was like, really? You know, and it's funny because they should show something from that particular season, because that's actually, and this is certainly nothing to say about your work, but it's actually the worst season. And it's the worst season because You think I've never seen the show? it's acting so bad. But I have to tell you that, you know, you really held it together in both that scene and of course the scene with Anj towards the end. And hey man, well done. Well done. Well, for those of you who haven't figured out yet, my last name is Goldberg. I am Jewish. Chutzpah, that one's mine. It's very rare that we get a word that's mine. Chutzpah is a word, but I'll let you get away with chutzpah. Whipple, I've had the pleasure to work with you and watch you grow as an actor. And, you know, in the monologue, chutzpah monologue, what I really liked watching was, and this is something that's really fun to watch for anybody that comes to our studio, particularly for us educators, which is when the actor is doing exactly what he wants to do and having fun while doing it. So much so that they kind of forget that they're doing something like this and they're just enjoying it, you know. And Mahati joked with the cast earlier, and will joke with all of you, that I always tell the foundation showcases before they go on stage, don't fuck up, right? But actually, back when I was a nicer guy, I used to tell the showcases, don't fuck up and have fun. And you did that in spades, man.
easily the hardest working man in show business. Legit, like, honestly, man, like if I work 1% as hard as you do, I'd probably fly. Shit, man, like you work so hard, and the thing is that a foundation showcase isn't just about showing more how we back, okay? Because the one thing that a lot of actors don't understand about the success of acting, and the success of acting isn't money, it isn't fame. It's about work and process. And the more you put your shoulder to the plow, one day that will grow roots, and one day that will grow that you can see on the surface. It's about hard work. And your hard work is so admirable that everything you did tonight was just a manifestation and a representation of that. But I will say this, because you're a high energy guy. You got a lot of energy. And the monologue, Kai Pacha? Kapacha, what? Fuck it, all right? Chutzpah still mine, all right? All right, but what I would say is that it was a different energy altogether. And what maybe people don't know is that for someone who has a naturally, really poppin' motor like you do, to achieve something like that isn't easy. It isn't easy. It requires a tremendous amount of breathing, a tremendous amount of grounding, a tremendous amount of calming down. I can only imagine what that must have been like at rehearsals. And my friend, I'm mightily impressed. Well done. Well done. I have no idea how big they are. We'll probably be late. No. I just want to say, ladies and gentlemen, take a bow once again. Woo! But I also want to grab good luck to our friend Shailesh from Gamma's Audio Visuals. All right. This is folks, this is a bit of a moment. You're all witnessing a little bit of JGS history in making. At this studio, we have had a person who's worked here. God, it's been a long time. 4 years, 5 years, I don't even know. Money G, and he's the guy that is the glue that actually holds this place together. And in many ways, my own life. And tonight, Money G lit and did all the technical work for the showcase. This is the first one he's ever done. And I know that this was a big jump for him. Yeah. You landed on your feet. Good job. I am so proud of you. On that note, if you stick around for the next one, you can stay. If you're leaving, get the fuck out. But ladies and gentlemen, it is always a pleasure to see everyone here at the studio. Thank you very, very much for coming. And please congratulate your friends because they've done a wonderful job.